तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोगों ने पहले भी फिजिक्स पढ़ी हुई, तो हर क्वेश्चन को हम 2 दफ़ा पढ़ेंगे ताकि आप इजीली साथ साथ याद करते जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड डैश वेव्स। तो इसका जो राइट आंसर बनता है मैकेनिकल वेव्स। क्वेश्चन नंबर 1, वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। Question number 2. Water waves, sound waves and waves produced on the string and spring are called dash wave. Right answer mechanical waves. Question number 2. Water waves, sound waves and waves produced on the string and spring are called mechanical waves. Question number 3. Time taken by a vibrating body to complete one vibration is called right answer time period. Question number 3. Time taken by a vibrating body to complete one vibration is called time period. Question number 4. Frequency is reciprocal of dash. Right answer time period. Frequency is reciprocal of time period. Question number 5. The number of vibrations or cycles of a vibrating body in 1 second is called its right answer frequency. Question number 5. The number of vibrations or cycles of a vibrating body in 1 second is called its right answer frequency. Question number 6. Pendulum clock invented by right answer Christian Huygens. Question number 6. Pendulum clock invented by right answer Christian Huygens. Question number 7. Sound travels in the form of dash from one place to another. Right answer waves. Sound travels in the form of waves from one place to another. Question number 8. There are dash categories of waves. Right answer 2. There are 2 categories of waves, mechanical waves and electromagnetic waves. Next question, question number 9. All sounds are produced by the dash of objects. Right answer vibration. Question number 9. All sounds are produced by the vibration of objects. Question number 10. Sound is a form of energy. Sound is a form of energy. Question number 11. All sounds are produced by the dash of objects. Right answer vibration. Question number 11. All sounds are produced by the vibration of objects. Question number 12. Unit of intensity of sound is right answer watt per square meter. Wm 2 power 2. Unit of intensity of sound is watt per square meter. Question number 12. Sound waves cannot pass through right answer vacuum. Sound waves cannot pass through vacuum. Question number 13. Speed of sound is a liquid is dash times that is gas. Right answer 5 times. Question number 13. Speed of sound in liquid is 5 times that is gases. Question number 14. Speed of sound in solids is 15 times that is gas. आप लोगों ने याद रखना है कि अगर पूछा जाए स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड 5 टाइम्स, अगर सॉलिड्स पूछ जाए तो 15 टाइम्स इन दैट इज गैसेस. तो क्वेश्चन नंबर 15. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज राइट आंसर 343 ms1. तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो आप लोगों ने ये याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 16. चिल्ड्रन कैन हेयर साउंड्स ग्रेटर देन अडल्ट्स. तो अडल्ट्स का मतलब होता है जवान. 16 नंबर क्वेश्चन, चिल्ड्रन कैन हेयर साउंड्स ग्रेटर देन अडल्ट्स. तो 17 नंबर क्वेश्चन है, ह्यूमन ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज लाइज बिटवीन राइट आंसर 20 Hz टू 20,000 Hz. ह्यूमन ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज लाइज बिटवीन 20 Hz टू 20,000 Hz. क्वेश्चन नंबर 18. A spherical mirror whose inner curved surface is reflecting is called dash mirror. Right answer concave mirror. Question number 18. A spherical mirror whose inner curved surface is reflecting is called dash mirror. Right answer concave mirror. तो 19 नंबर क्वेश्चन, a spherical mirror whose outer curved surface is reflecting is called dash mirror. Right answer convex mirror. तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर इनर कर्व्ड पूछा जाए तो कन्वेव इसका जवाब होगा, अगर आउटर कर्व्ड सरफेस पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा कन्वेक्स. तो 20 नंबर पे क्वेश्चन है, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर्स एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड राइट आंसर प्रिंसिपल एक्सिस. 20 नंबर पे क्वेश्चन, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड राइट आंसर प्रिंसिपल एक्सिस. क्वेश्चन नंबर 21. आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम concave mirror, rays of light parallel to the principal axis converge to point F. The point is called right answer principal focus. Question number 21. After reflection from a concave mirror, rays of light parallel to the principal axis converge to point F. Thus this point is called principal focus. तो 22 नंबर क्वेश्चन है, concave mirrors are also called dash mirror. Right answer converging mirror. 22 नंबर क्वेश्चन, concave mirror are also called converging mirror.
23rd नंबर क्वेश्चन है कन्वेक्स मिरर आर आल्सो कॉल्ड डिवर्जिंग मिरर। क्वेश्चन 23rd नंबर क्वेश्चन है कन्वेक्स मिरर आर आल्सो कॉल्ड डिवर्जिंग मिरर्स। तो 24 नंबर क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड, राइट आंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 24 नंबर क्वेश्चन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो 25 नंबर क्वेश्चन है एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग टू surfaces of which at least one is curved is called lens। Question number 25 any transparent material have two surfaces of which at least one is curved is called lens। Next question 26 number question the incident ray, the reflected ray and the normal all lies is dash plane, right answer same plane। 26 number question the incident ray, the reflecting ray and the normal all lies is in the dash plane, same plane। Next question the angle of incidence is dash to the angle of reflection equal, the angle of incidence is equal to the angle of reflection। Next question 28 number question in SI unit of charge is, right answer coulomb, in SI unit of charge is coulomb। Next question 29 number question a device which is used to store charge is called, right answer capacitor, a device which is used to store charges is called, right answer capacitor। Next question electric potential is a dash quantity, right answer scalar quantity, electric potential is a scalar quantity। Next question the rate of flow of electric charge through any cross sectional area is called, right answer current, the rate of flow of electric charge through any cross sectional area is called current। Next question SI unit of capacitance is farad F, SI unit of capacitance is F। Next question SI unit of current is called ampere A, SI unit of current is called ampere A। Next question V equal IR is called, right answer Ohm law, V equal IR is called Ohm law। Next question a device used in the circuit that senses temperature change is called, right answer thermistor, a device used in the circuit that senses temperature change is called thermistor। Next question V equal V1 V2 and V3 shows that resistors are connected in dash combination, right answer parallel, V equal V1 V2 V3 shows that resistors are connected in dash combination parallel। Next question 1 kWh equal, तो ये आपने याद कर लेना है 1 kWh इक्वल किसके है 3.6 mJ, ये आपने एग्जैक्ट ये याद रखना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्रीली मूव सो एज टू पास इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, राइट आंसर कंडक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्रीली मूव सो एज टू पास इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट विच मेजर लार्ज करंट एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट इज कॉल्ड अमीटर। तो 9 नंबर क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स लार्ज करंट एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट इज कॉल्ड अमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर, एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज, राइट आंसर ट्रांसफार्मर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पॉजिटिवली चार्ज्ड particles are called dash particles alpha particles, positively charged particles are called dash particles alpha particles। Next question 2 number पे question है high energy electrons are called dash particles beta particles, high energy electrons are called beta particles। Next question electromagnetic radiation of very short wavelength are called dash gamma rays। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।